for all of us to focus on this. But all of you sitting here belong to the university system or college system. You're a part of academics, and often, and you all are from diverse background, diverse subjects. Now, this must be coming to your mind that why is it that we are taught about entrepreneurship? Why is it becoming important for the faculty, engaging in in this domain? So I think because as a faculty, we all play a very, very critical role in nurturing an entrepreneurial mindset. The universities, they are not just centers of knowledge. They are not just, distributing the degrees to students, but we are the threshold where these students, this youth population enter into their career. So we provide that threshold to them. And therefore, I would say, I feel that we are the university and the colleges are the incubators of ideas and enterprises. So if we integrate, entrepreneurship into our teaching, into our mentoring, and into the research, I think we can inspire many students to think creatively, to take risk, to take the responsibility, and take risk very responsibly and develop solutions to the real world problems. Because it is we, the faculty, the teachers, who motivate our students, who always compel them or motivate them to choose their career. They get inspired by us. They get influenced by us. Therefore, you as a faculty play a very, very important role. So that is why these things are introduced in new education policies. And here, a customized program on short-term course is framed on entrepreneurship development, so that how can you play an important role in promoting this amongst your students. So this course will broadly focus on understanding the entrepreneurship as career choice and the mindset. The opportunity identification and idea generation, teaching the students that how to see those gaps in the market, how to just have an eye on the problems that are always very close by to them. But since we don't have that mindset, therefore we just ignore, or they are never visible to us. Then maybe if they get to see that, notice that, then how to go for business planning and models and converting those ideas into viable enterprises. We will expose you to legal, financial, and policy frameworks, basics of registration, MSMEs, etc., funding options, innovations, technologies, and the role of startups in driving the digital and social change. We will also maybe talk on social entrepreneurship, that is how enterprises can also create impact for the community building. It's not always, entrepreneurship is not always about earning profits, about creating wealth all the time, but it also includes lots of options where we can, hand in hand, take the social upliftment, social development of the society and the community. So here, you understanding, as we have talked already a lot. Dr. Faiza has talked a lot about AMU and the university. So let me just tell you a bit that how AMU and our faculty will play a role in this, because at AMU, with our legacy of social reform and empowerment, I think we are very uniquely placed to promote entrepreneurship, especially among the students from the disadvantaged backgrounds. Our role as faculty is not only to teach, but also to mentor, to encourage, and to connect the students with the resources and other networks also. I think if we just go for providing them simple handholdings and networking, that can change their lives. And the departments like commerce, management, economic, maybe engineering also, they integrate entrepreneurial thinking
into their curriculums, while our alumni network provides valuable mentorship and funding support also to a large extent. I think it's a time where we must be moving from knowledge to action now, to a practical play. Because entrepreneurship education is successful only when it moves beyond theory. So I think this short-term course will emphasize practical exposure through case studies of successful entrepreneurs, exposures to industry experts and startup founders. There will be group activities on business idea generation, exposure to incubation centers, funding agencies, etc. Actually, the ultimate objective is to ensure that all of you sitting here, present here, all the faculty can guide your students to transform their ideas into action. And for this, you yourself must be, first exposed to things, taste those things, and then you can share them with your students with confidence. So maybe I would say that in this era, in this time, for all of us, entrepreneurship development is no more a luxury. It is a necessity in today's India. So by equipping ourselves with entrepreneurial knowledge and teaching methodologies, we as faculty, I think they can shape a generation of innovators, job creators, and social change makers also. So let us see this short-term course not only to enrich our understanding, but also to carry forward the spirit of innovation and empowerment that our universities stand for. So I hope I just give you a very brief idea about what this course will be about and what you are going to get in this course. And I hope by the end of this program, you all are fully equipped to guide and mentor your students, and you should be the people who are not promoting them or pushing them towards job searching only, but also that is job seekers only, but also towards job givers. Because if you create one entrepreneur, you never know how many jobs you will be helping them to create. So that is what we all are looking for. And, through the course, you will come across our intellectual power in Aligarh Muslim University, and apart from there, people from national and international universities. From Aligarh Muslim University, we have, I think, people with eminence, knowledge in this domain. For example, Professor Parvez Talib, Dr. Ale Imran, Professor Sheba Hamid. We have people from legal background also, Dr. Nasir Mansoor, Dr. Gaurav Vashne, Dr. Mohammad Saim, Professor Shameen. And we have people from international domain, Professor Imran Salim, Professor Zaid Ahmed Ansari, and so on and on. You will be listening to them. You will be sharing, they will be sharing their wisdom, their exposures, their experiences with you. And the house is always open for all of you for interaction, for the interactive sessions, wherever you feel any doubt. So I wish you all the best for this program, and let us learn together. Let us do together. And I tell you, because maybe 5 years back or 10 years back, I was also always, ignorant about that. How can we go for entrepreneurship? We have to just teach. We have to, counsel them for searching for job. Me from a commerce background, maybe I used to tell our student that you can be an accountant, you can be a chartered accountant, you can go for ICWA or actuaries, etc., etc., etc. But the program, one of the program where what I'm running, which is in MOU with University of Houston, here I have already trained
more than 250 participants in 4 cycles. The 5th one is still going on. The program is still on. And those people, out of them who are trained, 45 businesses have already been established. And they are the students from Aligarh Muslim University Engineering College, Mathematics College, and also from underprivileged societies. So I think the faculty, the teachers can make a difference. So let us take this initiative and, carry on the torch for entrepreneurship development in the country. Thank you so much. Yes. So Faiza, I think we can proceed on now. Yes. I hope I have just given them a brief, taste of what will be there for them in the program. Yeah, and I hope they have a good time learning in this program with you, Dr. Asya. So participants, now it is time for you to watch the webcast of the AMU Centenary Address by the Honorable Prime Minister. Before that, I just want to make sure one thing. Your assignments have to be submitted on the Google Classroom. So a link has been shared with you on the group to join the Google Classroom. It is mandatory that you join it and then you submit your assignment on the Google Classroom. By the end of this day, Dr. Asya will give us she has already given us the topics. We will upload the topic for your written assignment on the Google Classroom. You need to submit it before the last date, which is also there on the Google Classroom. And from there, the assignment will be evaluated. We have 2 MCQ tests also. On the basis of that, your grades will be calculated. Please be present in all the classes. We get your joining data. You don't need to give us any attendance record. We get it from the Google Enterprise version. The exact time of your joining, your login, and the exact time of your logging out. Another small piece of request is that please be on mute while the session is in progress. If you have any question, any query, any add-on, you can raise your hand. This sign of a raised hand in the bottom of your screen is actually for raising your hand for your permission to be able to speak. This has nothing to do with attendance. So don't raise it thinking that you will be counted as present in the class, because this is only for permission to speak. Another important button here is a top arrow button. It's in the bottom, third from the right. Again, let me tell you, you don't have to press this button at any time. Many times participants think that this is the present now button. So that's how we are taking your attendance, but that's not the case. This button is to be pressed only by the resource person for making his or her presentation and sharing his or her screen. If you do this, your screen interrupts with ours. If you do this and go away, thinking that your attendance will be marked, we will call you, the technical admin will call you once, twice, thrice. You don't respond, I'm sorry, you will have to be removed from the classroom. So these are some small digital do's and don'ts that I wanted to share with you. Another very important do's and don'ts part of that is that please join the Google Classroom from your email ID, where the name is the same as your name on the enrollment list. So username and the enrollment list name must be same. If you're joining from your son's ID, your daughter's ID, your wife's ID, your husband's ID, we will be giving the marks also to them and the certificate also to them. Okay, so please remember that. I now take your leave and I once again extend to you a very warm welcome. You will be here with us at this platform of the UGC MMTTC EMU. We are very humbled and we warmly welcome you, and we will learn together with you most warmly. Thank you so much. Admin, you may now please play the recording of the AMU Centenary Address. Okay, thank you. madam. Thank you. Thank you, Dr. Asya. We can take our leaves now. Okay. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमन सर सैयद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की पाक व अजीम रिवायत के मुताबिक
इस पुरवकार महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से होगा। आइए पवित्र कुरान से उद्धृत एक अंश के सस्वर पाठ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। कारी मोहम्मद आजम साहब से मेरी दरखास्त है कि कुरान बरहक की चंद आयात की तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. Jazakallah khairan, Qari Sahab. Honorable Prime Minister of India, Janab Narendra Modi Sahab, Chief Guest of AMU Centenary Celebrations. Honorable Education Minister of India, Janab Naresh Pokhriyal Nishank Sahib, Guest of Honor, and Minister of State for Education, Janab Sanjay Dhotre Sahib. AMU Chancellor, His Holiness Ali Qadr Dr. Sayyidna Mufazzal Saifuddin Sahib, Pro-Chancellor Nawab Ibn Ahmed Saeed Khan of Chhatari, Vice Chancellor Professor Tariq Mansoor Sahib, Pro-Vice Chancellor Professor Zahiruddin Sahib, Honorary Treasurer Padma Shri Hakim Sayyid Zillur Rahman Sahib, Postmaster General Agra Division Janab Rajiv Umrao Sahib, Registrar AMU Janab Abdul Hamid Sahib, members of the Executive Council and the AMU Court, retired teachers, staff and students, alumni and alumni of the AMU spread around the world, distinguished guests, ladies and gentlemen. Namaskar, Adab, and a very good morning. I extend to you a hearty welcome in the virtual centenary celebrations of the AMU 100 Years of Academic Excellence. A bright winter morning here in Aligarh on 22nd December 2020. A momentous occasion, a grand celebration, a somber observance. एक ऐतिहासिक पल, भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के अनुसार आज दिन मंगलवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी 30/1942 यानी 6 जुमादी उल अव्वल 1442 हिजरी एक तारीख साज इदारे का एक तारीख में दर्ज किया जाने वाला लम्हा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का 100 साला जश्न. The day when a university that has given to the civilized modern world and our beloved country, India, freedom fighters, heads of states, governors, chief ministers, Padma awardees in all categories, civil servants, scientists, writers, speakers, doctors, engineers, actors, film and media personalities, and sportsmen. A university, the academicians of which collaborate with Nobel laureates' labs in overseas research institutions, and a university whose alumni and alumni make for a global presence with a heart that beats for their alma mater. This university celebrates 100 years of academic excellence. In the year 2020, while only a handful of the close to 1,000 Indian universities get to complete 100, the AMU touches the centenary mark of becoming a university by an act of the Parliament from the Madarsatul Uloom 1875 and MAO College 1877, established by Sir Syed Ahmed Khan. To mark this rare distinction, we will very shortly be joined by the Prime Minister of our country, Ali Janab Narendra Modi Sahib, a Prime Minister
who gave us the new education policy, a Prime Minister who was bestowed with the Champions of the Earth, United Nations' highest environment award, and a Prime Minister who reaches to the people of his country with Mann Ki Baat. To deliver the introductory remarks for this August gathering, we have with us Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor, AMU, a medical doctor and surgeon with hours of patient hard toil, an academician with a record of empathy and team spirit for students and fellow teachers, and an academic leader with his objectives firmly set on raising research and educational standards. He took the reins of the university in his hands in the year 2017, the year of the founder's bicentenary, which was also graced by the former and present president of the country, respectively. Of his several centennial contributions to the Ali community and the overall higher education sector of the country is the towering centenary gate opened for public 2 months ago by our revered Chancellor, His Holiness Ali Qadr, Dr. Sayyidina Mufazzal Saifuddin, put together by Professor Tariq Mansoor in a similar vein. The first day cover of the postal stamp to be unveiled by the PM today, followed by his online address, are destined to place AMU on yet another path of excellence for the 100 years to come. जब हम न होंगे हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के हम रहेंगे खिरामा. I request Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor, AMU, for his introductory remarks. Honorable Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre ji, Chancellor His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, Pro Chancellor Nabab Ibn Sayyid Khan Chatari, Pro Vice Chancellor Professor Zahiruddin, Honorary Treasurer Hakim Sayyid Zillur Rahman Sahab, Registrar Mr. Abdul Hamid and Registrar General Post Agra, other officers of the university, staff, students, alumni, media persons, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, namaskar and good morning to all of you. On the occasion of centenary of Aligarh Muslim University, I take the opportunity to congratulate all of you. The MAO College in AMU achieved great milestones in these 100 years. And we are all proud of the work university has done in educational as well as other fields. It's a matter of great honor for any institution to celebrate the centenary of its establishment. I am really humbled and honored to be Vice Chancellor on this great and historic occasion. I also had the privilege to preside over the bicentenary birth celebrations of Sir Syed Ahmad Khan in 2017. The foundation of Aligarh Muslim University was a glorious chapter in the history of the development of modern and scientific education in India. A concerted effort to establish a university for the modern education of Indian youth by Sir Syed Ahmad Khan and later by his associates resulted in the establishment of this important institution in December 1920. I will give 3 quotations regarding the Aligarh Muslim University and the MAO College. Professor G.C. Chatterjee, Inquiry Committee appointed at the instance of the Government of India in 1961 observed, Muslim University Aligarh with its open door policy of admitting members of all communities and giving them opportunities to share fully in its residential and corporate life is in a especially privileged position to foster that emotional integration which is essential for the preservation of India's culture and political unity. The second quotation is of Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of India. Delivering the annual convocation address on 20th February 1949 observed that Sir Syed had established in Aligarh not only a college but also an intellectual and cultural center in line with the progressive spirit of the times. The center of this circle was Sir Syed himself, and he attracted around him some of the best intellectuals in the world. The third quotation is of Sir Hamilton Gibbs, a French Orientalist, who characterized MAO College as the first modernistic organization in Islam. First modernistic organization in Islam. It was not an easy thing
in those times to bring a community from the medieval thought process into modern scientific thought process. It required exemplary commitment, conviction, and sacrifice of some great persons under the leadership of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed was an ardent advocate of Hindu-Muslim unity and expressed his desire to see them live in togetherness and oneness. It would be a great tribute to this great man, with India becoming a major power in the field of modern and scientific education across the globe. The alumni of Aligarh Muslim University, they have always played a very important role in the development of the university. They were responsible for carrying on the movement for upgradation of the MAO college into a university. Even now, our alumni are playing an important role in projecting the image of the university in various parts of the India and the world. AMU has got a very unique alumni network, and our alumni are contributing in various ways, such as scholarships, infrastructure, development, and various other fields. The Alumni Affairs Committee is also bringing out a World Alumni Directory in a few days' time. Definitely our alumni, they are our goodwill and brand ambassadors. AMU has played a pioneering role in women education, which will be elaborated by Professor Naima Khatun in her address. Now we have to look at the future. The university has to lay stress in the next century on research and innovation and a new work culture. We also have to adopt new modes of teaching and research, especially in aftermath of COVID-19 pandemic. While strengthening our traditional departments, we have to look at new courses such as nuclear medicine, genetics, nursing, artificial intelligence, robotic engineering, renewable energy, nanotechnology, forensic sciences, among others. I am sure with the cooperation of all concerned, especially our faculty and students, we have a bright and productive future for the next century. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for this introductory remark. मुअज़्ज़िज़ सामीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 7 साला जश्न की तक़रीबात हर अली के लिए इंतहाई मसरत अफरोज और बाइस फ़ख्र हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक दरसगाह ही नहीं, एक मुकम्मल परवरिश और इल्म तहजीब का गहवारा है। उर्दू के मायानाज नस्र निगार मुख्तार मसूद अपनी किताब हर्फ शौक में रकम करते हैं कि जब अलीगढ़ से तालीम मुकम्मल करने के 50 बरस बाद एक दोस्त ने अलीगढ़ की याद के तजर्बे के बारे दरियाफ्त किया तो जवाब दिया, मैं अपना अलीगढ़ अपने हमराह ले आया था। उसे याद करने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा अलीगढ़ मेरे खून में गर्दिश करता है। वो मेरी फिक्र का मुहर्रिक है और महवर भी। वो मेरे हर अंदेशे का महरम और हर अमल की नियत है। मेरा अलीगढ़ मेरा हाल है, हाल को याद नहीं करते, बसर करते हैं। I must say that a university of such stature has some achievements to recount for the world to emulate. विगत शताब्दी में विश्वविद्यालय की विलक्षण उपलब्धियां रही हैं और प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी, साबिक डीन शोबा इस्लामी दीनियात और हाल के डायरेक्टर सर सैयद अकेडमी से मेरी गुजारिश है कि इस मौजू पे अपना खिताब पेश करें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Education Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre ji, His Holiness Sayyidana Mufaddal Saifuddin, the respected Chancellor of our university, respected Pro-Chancellor Nawab Sahab Chitari, Honorable Vice Chancellor of AMU Professor Tariq Mansoor, Pro Vice Chancellor, Honorable Treasurer, Registrar, and the university functionaries, and other dignitaries, ladies and gentlemen. It is a great privilege and honor for me to present a brief report about some aspects of the achievements of AMU in the last 100 years. Our founder, Sir Syed Ahmad Khan, was a great reformer and visionary, but he knew how to realize his dreams. And Aligarh Muslim University was the realization of his dream when it came into existence
in December 1920. In 1920, the university started with 13 departments of studies. But from 1920 to 1926, university made good progress. At the time of its inception, AMU had less than 1,000 students. But by 1926, approximately 3,000 students were enrolled. The Department of Tib, Unani Medicine, Hindi and Sanskrit and Zoology were also established. In the decade of 1930s, the university saw all-round development and expansion. The development of science and education was most striking. The laboratories of all science subjects were introduced. Research activities also made progress, and the first PhD was confirmed in chemistry in 1934. In the field of engineering and technology, a beginning was made with the establishment of the Institute of Technology in 1936. The decade of 1940s was the historical period of the independence struggle, and the Aligarh Muslim University played a prominent role in that. This role began from 1920s itself, when the mass movement started for the freedom of India. Aligarh Muslim University played its active role in responding to the call of Mahatma Gandhi. Some of the distinguished alumni of Aligarh Muslim University were the prominent freedom fighters during non-cooperation, Khilafat movement and subsequent struggles under the leadership of Mahatma Gandhi. Among them we can name Maulana Muhammad Ali, Shaukat Ali, Hakim Ajmal Khan, Mukhtar Ahmad Ansari, Hasrat Mohani, Saifuddin Kichlu, Raja Mahendra Pratap, Khan Abdul Ghaffar Khan, Abdul Majid Khaja, Dr. Zakir Hussain, and Captain Abbas Ali, a close associate of Netaji Subhash Chandra Bose. The post-independence period and the decade of 1950 onwards is a period of unprecedented expansion of Aligarh Muslim University as a prime institution of higher education in India. It is also a period of gaining national and international repute and a significant contribution to the nation building. The national repute and importance of AMU can be gauged by the fact that all the prominent leaders, including Mahatma Gandhi, Babu Rajendra Prasad ji, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Pandit Govind Ballabh Pant, Srimati Sarojini Naidu, Shri Rajgopalacharya, Dr. S. Radhakrishnan, Shri Lal Bahadur Shastri, Shri Jaiprakash Narayan, Mr. Fakhruddin Ali Ahmad, Gyani Zail Singh, Dr. APJ Abdul Kalam, Shri Pranab Mukherjee, and our present President of India, Shri Ramnath Kovind, were among those who visited the institution and provided their support to us. At the same time, Aligarh Muslim University also gained great international credentials. Among many foreign luminaries and leaders who visited AMU are Mrs. Eleanor Roosevelt of USA, Raza Shah Pahlavi of Iran, Malik Saud of Saudi Arabia, Jamal Abdul Nasser, President of Egypt, Tinku Abdul Rahman of Malaysia, Sheikh Zayed Sultan Al Nahyan, and many other heads of states and prominent leaders of the world. AMU established academic and research repute also. 7 Nobel laureates, including Sir C.V. Raman, Arthur Crompton, Alexander Todd, Abdul Salam, Mother Teresa, Dalai Lama, Takaki Kajita visited Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University also played significant role in the nation building and in the leadership of the country and other countries also. It produced 9 heads of state of different countries, 19 governors, 17 chief ministers,
4 Supreme Court judges, 11 High Court judges. The highest civilian award, Bharat Ratna, was bestowed upon 2 AMU alumni, and the second highest civilian award, Padam Vibhushan, was conferred on 8 of them. 27 Padam Bhushan and 36 Padam Shri awards were also conferred upon the AMU students up till now. At present, AMU consists of 13 faculties comprising 120 departments, which teach more than 350 courses. It is primarily a residential university which provides hostel facilities to more than 20,000 out of 35,000 students on our roll. The Central Library of the university, named after Maulana Abul Kalam Azad, performs the function of a national library with no other university library of the some continent can match it in the collection of Oriental manuscripts and in the rare books. It has some of the highly valuable Sanskrit works translated into Persian like Mahapurana, Bhagavad Gita, Mahabharata, Leelavati, etc. It also has Dara Shikoh's rare books and manuscripts which have been digitized and uploaded for the benefit of the researchers. In conclusion, we would like to say that AMU is not only a prime educational institution of our country, which is our pride, the pride of the whole country, but it is also symbolizes the great idea of India, our great nation. It is a symbol of nationalism, secularism, and unity in diversity. I congratulate all on this historical occasion of the centenary celebrations. Thank you. Thank you very much, Professor Naqvi Saab. Ladies and gentlemen, here today we will be addressed by the Honorable Prime Minister of India, Janab Narendra Modi Sahab, as chief guest, and we have been joined by the Honorable Education Minister of our country, Janab Ramesh Pokhriyal Nishank Sahab, as guest of honor. Both of them espouse the cause of women empowerment reflected in the slogan, Beti Bachao, Beti Padhao. एक समय वो भी था जब हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद को नारी की दुर्दशा पे लिखना पड़ा था, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक में उनके रफ़का मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, शिबली नुमानी और राजा जयकिशन दास के साथ उनकी सवाने के मौलिफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी रहे हैं। हाली ने अपनी शाहकार नज्म चुप की दाद औरत को मानून करते हुए लिखा था, अफसोस दुनिया में बहुत तुम पर हुए जोर जफा, हक तलफियां तुमने सही बेमहरियां झेली सदा. This later became a masterpiece in early feminist literature, but one couple with a dream for the daughters changed it all. For an account of women in AMU at 100, I request Professor Naima Khatoon Gulrez, Principal Women's College, AMU. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education, Shri Sanjay Dhotre ji, respected Chancellor, Pro-Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Treasurer, Registrar, distinguished guests, students and staff. The momentous and proud occasion of the centenary celebration makes it clear Aligarh Muslim University is not just any other university. It is the name of a movement and a mission to spread the light of knowledge, scientific temperament, tolerance, inclusiveness, and dispel the darkness of ignorance and narrow-mindedness. A seminal contribution of the Aligarh movement to the collective India, it is in its insistence on women empowerment. It made female education a reality at a time when it was considered a taboo, as women's segregation is taken as a much revered moral virtue. Parda was more important than their education and personality development. The Aligarh movement had conflicting voices regarding women's education, and initial bottlenecks prompted Gail Minault and few others to conclude that the founder had shown a degree of inconsistency while addressing the issue of women education and rights. However, the Aligarh movement in its entirety did not falter on this count, as many companions of Sir Sayyid relentlessly espoused the cause of female education.
The reformist movement of Aligarh, with its focus on women's education, had started to pick up momentum since the end of the 19th century and became more assertive in its demand for availability of formal education and institution with the advent of the 20th century. Ghulam Saqlain, Karamat Hussain, Mumtaz Ali, Shaukat Ali, and Sheikh Abdullah were among the most active leaders for the cause. Sheikh Abdullah subsequently became the Secretary of Women's Education Section in 1900. शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि पूर्व में भी माननीय शिक्षा मंत्री का स्नेह और आशीष हमें प्राप्त रहा है. In the past few months, he has been with us twice online, once to inaugurate our medical college's exam center and then to address us as chief guest in our seminar on NEP and release a book on quantum physics. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has joined us, and I request Vice Chancellor Aligarh Muslim University, Professor Tariq Mansoor, to extend him a warm welcome. Honorable Prime Minister and Chief Guest Shri Narendra Modi ji, Honorable Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre ji, Secretary Higher Education Mr. Amit Khare, Chancellor His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin. I request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly deliver his address. नमस्कार. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय धोत्रे जी, वाइस चांसलर भाई तारिक मंसूर जी, सभी प्रोफेसर्स, स्टाफ, इस कार्यक्रम में जुड़े एएमयू के हजारों छात्र छात्राएं, एएमयू के लाखों एलुमनाई, अन्य महानुभाव और साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपने एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया है. मैं तस्वीरों में देख रहा था सेंचुरी गेट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन, तमाम विभागों की बिल्डिंग्स को खूबसूरती से सजाया गया है. ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, इनके साथ शिक्षा का जो इतिहास जुड़ा है वो भारत की अमूल्य धरोहर है. आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं. मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं. एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं. वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं.
प्राउड अलीज, यही कहते हैं ना आप लोग, पार्टनर्स, आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है, एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर % से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में ये किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है। साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है
एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में होता है एम्पावरमेंट। एक एम्पावर्ड विमेन का हर स्तर पर, हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। फिर चाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य शिक्षा संस्थाओं से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा में जोड़ें और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक लेकर के जाएं। साथियों, एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कॉन्टेम्पररी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर डिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके। यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए नए स्टार्टअप्स के जरिए देश की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक आउटलुक उनकी पहली प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के युवाओं की इसी एस्पिरेशंस को प्राथमिकता दी गई है। हमारी कोशिश ये भी है कि भारत का एजुकेशन इकोसिस्टम दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक बने। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था है, उससे स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी हो गई है। हर एग्जिट ऑप्शन के बाद उन्हें एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की फीस की चिंता किए बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों, सरकार हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने और सीटें बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 आईआईटी थी, 16। आज 23 आईआईटी है, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल आईटी थी, 9 ट्रिपल आईटी थी। आज 25 ट्रिपल आईटीज हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 आईआईएम्स थे, आज 20 आईआईएम्स हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज देश में 22 एम्स हैं। शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे, सभी का जीवन बदले, हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, एएमयू के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों ना 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। जैसे एएमयू के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है,
क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुषों के जन्मस्थान जाए, उनकी कर्मभूमि जाए, उनके परिवार के लोग अब कहां हैं उनसे संपर्क करें। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के तौर पर 75 हॉस्टल्स एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और काम है जो देश के लिए एएमयू के छात्र छात्राएं कर सकते हैं। एएमयू के पास देश की इतनी बेशकीमती प्राचीन पांडुलिपियां है। ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मैं चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें डिजिटल, इन्हें वर्चुअल अवतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है, उस लक्ष्य की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है, इसे लेकर पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी है। इसलिए आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। जब इसको लेकर एक मजबूत नींव पड़ेगी तो लक्ष्य तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले हैं, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक परवरिश थी, अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए किया, वही काम अब आपको, युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए करना है। जैसे आजादी
एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा, तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। ये विमर्श समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथी कर सकते हैं। साथियों, हमें यह समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है। उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हाँ, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। साथियों, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो वो इंतजार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित विकास का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हमारे युवा, आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। साथियों, 100 साल पहले 1920 में जो युवा थे, उन्हें देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का, खुद को समर्पित करने का, बलिदान देने का अवसर मिला था। उस पीढ़ी के तप और त्याग से देश को 1947 में आजादी मिली थी। आपके पास, आज की पीढ़ी के पास आत्मनिर्भर भारत, नए भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करने का अवसर है। वो समय था 1920 का, ये समय है 2020 का। 1920 के 27 साल के बाद देश आजाद हुआ था। 2020 के 27 साल बाद, जो कि अगले 27 साल 2020 से 2047 आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल है। वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, आप उस ऐतिहासिक समय के भी साक्षी बनेंगे। इतना ही नहीं, इन 27 साल में आधुनिक भारत बनाने के आप हिस्सेदार होंगे। आपको हर पल देश के लिए सोचना है। अपने हर फैसले में
देश हित सोचना है। आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आप सभी को एएमयू के 100 वर्ष होने पर फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन 100 साल में जिन जिन महापुरुषों ने इस संस्थान की गरिमा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किया है, आज उनका भी पुण्य स्मरण करता हूं, उन सबका भी आदर करता हूं और फिर एक बार आज के इस पवित्र अवसर से भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व भर में फैले हुए अलुमनाई को भी मैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक शुभकामना करता हूं, उनके उत्तम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। It is my proud privilege to propose the vote of thanks on the historical occasion to commemorate the centenary celebration of Aligarh Muslim University. On behalf of Aligarh Muslim University community around the world, I express my deepest sense of gratitude to our Honorable Pradhan Mantri Ji, Shri Narendra Modi Ji, for gracing the occasion as a chief guest. Our Honorable Pradhan Mantri Ji is a great visionary who has made his mark as one of the tallest global leaders with his dedication, sincerity, and honesty of purpose for our country and fellow citizens. His inspiring presence and address as chief guest on this momentous occasion will be written in golden words in the annals of history of the Aligarh Muslim University. The Aligarh Muslim University is a symbol of nationalism, national unity, inclusiveness, scientific temper, and excellence. And these qualities are epitomized in the personality and policies of Honorable Pradhan Mantri Ji, Shri Narendra Modi Ji. I convey my deep sense of indebtedness to our guest of honor and Honorable Shiksha Mantri Ji, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank Ji, for his esteemed presence on this historical occasion. Manya Shiksha Mantri Ji is leading from the front in transforming the educational landscape of the nation through the new National Education Policy 2020. This policy is being lauded not just in India, but all over the world for its flexibility and foresightedness. The Aligarh Muslim University is fully committed to the ideals of National Education Policy for its implementation in letter and spirit. We are also indebted to Honorable Minister of Education and Honorable Minister of State for Education, Communications and Electronics and Information Technology, Shri Sanjay Shamrao Dhotre Ji, for his constant support for the growth and development of the Aligarh Muslim University. I express my sincere thanks to Shri Amit Khare Ji, Secretary Higher Education, Ministry of Education, Government of India, and Dr. Vineet Joshi Ji, Additional Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, for his continued support and guidance. I also thank Shri Rajendra Kumar Ji, Director PMO, and Shri BVRC Purushottam Ji, PS to Honorable Shiksha Mantri Ji, for continuously guiding us and coordinating with us for successful conduct of this program. I express my deep sense of gratitude to Department of Post, Ministry of Communication for timely issuance of postal stamp on the theme Centenary Celebration of Aligarh Muslim University. We are also thankful to UP Government, District Administration and National Informatics Center for their meticulous coordination of this event. I further express my deep sense of appreciation to Honorable Chancellor of AMU for blessing us with his presence. The Aligarh Muslim University is deeply grateful to alumni from all over the world, especially USA and West Asia, who have joined this program in large numbers and have made it international. I sincerely thank Member of University Court, Executive Council, Academic Council, AMU teachers, staff, and student fraternity for joining today's event in vast numbers. Thank you.
Thank you very much, Registrar Mr. Abdul Hamid Saab, for moving the vote of thanks. Ladies and gentlemen, the AMU Tarana is not merely a song. It's a worldwide phenomenon, a deluge, a rallying point for our alumni around the world. We have something called Tarane Wali feeling, and it has become a metaphor for unconditional love, allegiance, and reverence for Bani Darsgah Sir Syed Al-Rahma and Madre Ilmi Aligarh Muslim University. इस शानदार महफिल का आगाज हमने एक मजहबी रिवायत से किया था और इख्तिताम हम एक इल्म दोस्ती और हिब्बुल वतनी की रिवायत से करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय असरारुल हक मजाज की नज्म नजर अलीगढ़ के चंद अशार हमारा दिल पजीर तराना है। Eminent visitors to AMU are moved by the foot tapping and hand clamoring josh in our tarana and have gone on record saying that it's the best song any university can have. तराने के बाद हमारे देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हम सब इसके सम्मान में खड़े होंगे। AMU तराना प्लीज।
जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।